Welcome back to the channel, guys. I'm your host Mike, and in this video I'm gonna show you the insides of my computer. So let's back to the video, and till then enjoy the intro, and please watch this video as it is not going to be a 5 or 6 minute video. And from today onwards I will be trying to make videos shorter than 5 minutes, as I know that you all are very busy in your lives, so I will not waste your much time. And please watch this video till the end to know some tips and tricks which can save your bugs when your PC is not working or something. So let's get back to the intro. Okay, so did you like the intro? So if you have any suggestions regarding the intro, or should I change it or not, then please comment down below and just take a look at my PC. So here is my PC, and I just reassembled everything out of my CPU. And let me give you a quick look of the system. So this is the front of the system which I have took out. It might be different for you. And this goes on the top of the CPU fan like this. So moving on to the next is the outer case. This one is the outer case which will be on the top of this. And package we get a DVD writer and a WD 1TB black hard drive. It comes with a 5 years warranty, so it's a very good quality, and it has 7200 RPM. Earlier it was having 5400. There are two variants, 7200 RPM and 5400 RPM. So this, let's keep it aside. Okay, so these are the two RAM sticks, 4GB and a 2GB. And here comes the beast. This is a GPU, graphic card processing unit, and it comes from Nvidia, as you can see here, and the model is GeForce GT 620, and the capacity of this is 1GB. This is my tool which helped me take these things out. Here is the motherboard. This whole is a motherboard, and here you can see this CPU fan. Inside that there is a thing which takes all the heat out from the CPU, and below these thing there is a CPU Intel Core i5 processor 3rd generation, and this is how it looks. So let me show you some slots. The big one which you can see here is the RAM slot, and the graphic card goes here in this slot. That's it. These are the common things which you can see inside of your CPU. Okay, so if you are still watching this video, then this is a bonus tip for all of you. I will tell you how you can fix your computer and save a lot of money. So let's begin. सबसे पहले तो आपको जितने भी केबल्स हैं CPU के पीछे, उनको आप एक बार निकाल दो. उसके बाद आपके CPU को एक वुडन सरफेस पे रख दो. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको ये करना है कि आपको जो CPU का जो साइड का पैनल है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, उसको आप अनस्क्रू करके बाहर निकाल लो. और इसके बाद किसी भी अंदर वायर्स को कोई भी टच मत करना. उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उसमें रैम स्टिक्स होते हैं. जो रैम स्टिक्स हैं उनके साइड में सबसे आगे और पीछे 2 हुक मिलेगा वाइट कलर का. आपको उसको प्रेस करना है ताकि वो अनहुक हो जाए. उसके बाद आप रैम स्टिक को पुल करके बाहर निकाल लो. एक बार आपने रैम स्टिक को बाहर निकाल लिया, उसके बाद आपको रैम स्टिक के सबसे नीचे के पार्ट में गोल्डन स्ट्रिप्स होते हैं जो कि गोल्ड से बने होते हैं. मोस्टली होता क्या है कि उस पर कार्बन की पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि आपके रिमोट के बैटरीज में कभी कभार कार्बन पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो आप रिमोट के बैटरी को अपने पेन पे किसी भी सरफेस पे घिस के रब करके उस कार्बन पार्टिकल्स से आप उसको हटा दोगे तो आपका बैटरीज काम करने लगता है. सेम उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है कि जो गोल्डन स्ट्रिप्स होते हैं उस पर कार्बन पार्टिकल्स आ जाते हैं. आपको क्या करना है, पेंसिल का जो रबड़ होता है उस रबड़ को जेंटली उसके ऊपर स्ट्रिप के ऊपर घिसना है आपको. एक बार आपने रबड़ से घिसा उसको तो क्या होगा कि जो भी पार्टिकल्स होंगे वो हट जाएंगे. एक बार आप ये सब कर लो. आप जैसे उसको पुश करोगे रैम स्टिक को, जो लास्ट के हुक्स हैं वो अपने आप प्लग इन हो जाएंगे और आपका रैम स्टिक अच्छे से लग जाएगा. और एक चीज ध्यान रखना, रैम स्टिक के अंदर एक पोजीशन मार्क होता है जहाँ पे एक कट होता है. आपको वो कट को मदरबोर्ड के अंदर जो स्लॉट है उसमें भी कट दिया होगा, उससे मिलाना है ताकि आप सही जगह पे रैम स्टिक को डाल पाओ. साइड पैनल लगाना है, वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट करो. होप इट विल गेट ऑन सून. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को. प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द फ्यूचर अपडेट्स इंस्टेंटली on your mobile. Till then, happy watching. Jai Hind.